Do you know the 100 most important math questions for your class 10? Save this video and let's find out. Question number 75. Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. Right. So third term is given to you 5 and seventh term is given to you 9. So let's use the AN formula. So A3 is equal to A plus 3 minus 1 into D, which is equal to 5. So we'll get equation A plus 2D is equal to 5. This is simple linear equation in two variable. ठीक है. तो सिमिलरली नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 9. तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 9. दैट इज द सेकंड इक्वेशन. तो दो लीनियर इक्वेशन हो गए. लेट्स डू इट. सो सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, A माइनस A विल गेट कैंसल्ड. 6D माइनस 2D विल गिव यू 4D एंड 9 माइनस 5 इज 4. सो 4D इक्वल टू 4 मीन्स D इक्वल टू 1. कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1. पुट द D वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1. So A plus 2 into 1 equal to 5. So 5 minus 2, 3. So A equal to 3 means first term is 3. So 3, then just keep adding 1. क्योंकि common difference क्या है 1. So 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6 and so on. So that's the AP 3, 4, 5, 6.